Yo, what's up, everyone? This is Nikhil, your DLR mentor at Bullseye. So, today we are going to start with the 50-day series of DLR section, in which I'll be solving 50 different kinds of CAT level sets, which will help you to progress your DLR section for your CAT 2025. So, today we'll start with the first set. Now, if you're looking at this set is specifically a grid-based set. है ये. Now, what they are saying the numbers 1, 2, 3, 4 till 10 are placed in 10 different slots of rows and columns. So we have 10 blocks, we have 10 numbers, and we have to place it. Now, first look at the इन लोगों ने. They are saying that number in any row appears in an increasing order from left to right. Means from left to right they have an increasing order. Now similarly in row 2 लेफ्ट टू राइट इंक्रीज रहेगा, रो 3 में भी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज रहेगा, और रो 4 में तो एक ही नंबर है. ठीक है. नाउ सेकंड क्लू क्या कह रहा है? नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन एन डिक्रीजिंग ऑर्डर. मींस इन रो कॉलम नंबर 4 वी कैन सी दिस विल बी द हाईएस्ट नंबर, दिस विल बी द लोएस्ट नंबर. इवेंचुअली ये दो क्लू से वी आर गेटिंग टू नंबर्स का प्लेसमेंट. कैन यू गेस इट? इफ एनीबडी हैज गेस्ड इट, so we have two numbers का placement. First number will be a 10 over here because left to right it is an increasing order. तो ये सबसे highest हो गया. Similarly यहाँ से यहाँ increasing है, नीचे से ऊपर, तो obviously this will be the highest number amongst the all. Also left to right is in decreasing order, तो obviously one will be placed over here, or else I can say 10 and one will be placed over here. Is it clear to everyone? Now similarly 10 के पहले कौन सा नंबर आता है? सो वी हैव अ 9. सो कैन आई प्लेस 9 इन एनी ऑफ दिस ब्लॉक्स? नाउ सी 9 अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो इसके ऊपर कोई तो ग्रेटर नंबर चाहिए. अगर मैंने यहाँ 9 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, आई वांट अ ग्रेटर नंबर अबव दिस, अहेड ऑफ दिस. सो ऑब्वियस है कि 9 विल बी एडजेसेंट टू 10. सो कैन आई से 9 कैन बी ईदर ओवर हियर और एल्स 9 कैन बी ओवर हियर. सो वी नीड टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स फॉर द अबव अरेंजमेंट. नाउ 10 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, एक बार 9 यहाँ पे प्लेस कर दिया, वी कैन प्लेस अ 9 over here. Similarly, copy pasting the same arrangement over here. Either 9 can be over here or else 9 can be over here. Is it clear to everyone that 1, 9 or 10 placed कैसे हुआ? Now we have a clue that either 1 will be placed in the same row or same column as 10. Obviously तो 1 का placement तो clear हो गया अपने को. Now next, neither 2 or 3 are placed in the same row or as same column as 10. Means what? So 2 or 3 cannot be over here or over here. Same 2 और 3 यहाँ पे रहेंगे. तो 2 और 3 के लिए प्लेसेस क्या क्या बचे अपने पास? इधर 2 और 3 यहाँ पे रहेंगे, या फिर 2 और 3 यहाँ पे हो सकते हैं, या फिर 2 और 3 यहाँ पे हो सकते हैं. राइट. सो 2/3 कैन आई प्लेस 2 over here? इफ आई प्लेस 2 over here, इससे कोई तो छोटा नंबर मुझे यहाँ पे लगेगा और इससे कोई तो छोटा नंबर मुझे नीचे लगेगा. तो ऑब्वियसली 2 cannot be over here, but 3 can be over here, and 2/3 will be over here. Is it clear to everyone कि 2, 3 का placement कैसे हुआ है? Now, similarly, this will be copy pasted in this 2/3, 2/3, same 2/3, 3, 2/3, or else a 2/3 over here, 3 over here, and 2/3 over here. Now, coming to the next clue, we are getting that neither 7 nor 8 is placed in the same row and same column as 9. Now 7 or 8 are the numbers immediate lowest number below 9. So अगर 7 और 9 same row और same column में नहीं है तो obviously 8 and 7 has to be over here. Similarly in this case, if 7 and 8 are not over here, obviously 8 and 7 will be over here because this row is in decreasing order from right to left and increasing order in left to right. Similarly ये copy paste यहाँ पे होगा 8, 7 over here and we get a 8, 7 over here. Is it clear to everyone? Now we are getting the next clue as 4 and 6 are placed in the same row. तो यहाँ पे placement के लिए जगह क्या क्या बची अपने पास? Can I place 4 and 6 in the same row? No. Can I place 4 and 6 in the same row? No. तो ये अरेंजमेंट कैंसल हो गया अपना. सिमिलरली यहाँ पे प्लेसमेंट पॉसिबल है. आई कैन प्लेस अ 7 नहीं, क्या 4 and 6 है, तो इधर आई कैन प्लेस 6 and what, यहाँ पे 4. सिमिलरली यहाँ पे सेम रो एंड सेम कॉलम में चाहिए तो पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे सेम, यहाँ पे पॉसिबल है दैट इधर 4 एंड, बट यहाँ पे उन्होंने रोज में बोला है तो कैन आई प्लेस 6 and 4 ऐसे? नो.
सो कॉलम वाइज तो नहीं है, तो सेम रो है, मतलब वी गॉट द अरेंजमेंट, दैट इज 4 6 9 10, 2 और 3 3 8 2 3 7 1. नाउ आई हैव स्टिल वन नंबर दैट इज 5. सो 5 का प्लेसमेंट कहां पे रह सकता है, कहना है. नाउ 2 और 3 के प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं है, so 5 can be either over here, either over here, either over here. So we have a possibility of 2 3, but 5 के लिए तो एक ही जगह अपने को प्लेस करना है. So if I plot 5 over here, means 5 is the lowest number, I have to plot 3 over here, but 3 is not greater than 5, so 5 cannot be here. If I place 5 over here, means 5 should be the lowest in this column. उसके ऊपर 3 डाल दिया तो obviously 3 तो 5 से बड़ा नहीं, तो मतलब obviously यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है. Is it clear to everyone? Now we have got the arrangement. Simple cat का set था ये. It was from slot 2024 का set था ये. So we'll move on to the questions. What is the row number which has the least number of sum placed in that row? Now obviously row 1, row 2, row 3, row 4. Obviously 1 यहाँ पे आ गया अपना. ठीक है, लोएस्ट क्या आएगा फिर यहाँ पे? रो नंबर पूछा है तो रो नंबर विल व्हाट? 4. Next, which of the following statement must be true? 10 is placed in row number 1. It is true. Obviously 1 2 3 4 row numbers मिले, 10 row number 1 में है. 1 is placed in row number 4. Obviously that is also correct. Means the answer is both 1 and 2. Next, in which of the following statement must be true? 2 is placed in slot of column 2. Yes, 2 can be placed in slot 2, column 2 का last slot and 3 का last slot, but they are saying must be true चाहिए, तो must be true है क्या ये? No, this is can be true. ठीक है. Same 3 is placed in slot in column 3. So column 3 में तो 3 आ रहा है, but 3 is also possible in column 2. So this also cannot be said एकदम clearly or definitely. So the answer is neither 1 nor 2. Next, for how many slots in the grid the placement of the number cannot be determined with certainty? Obviously it is 2 and 3. So I can say number of slots is 2. What is the sum of the numbers placed in column 4? So column 4 का sum 8 plus 7 15 10 25 and 26 is your answer. So that's it everyone. This was the first set of the 50 days series of DLR, 50 days 50 DLR sets ka series. Now you will get to see more such kind of questions, not only the previous year question but also few questions which we have designed at Bullseye. So this will help you with respect to DLR preparation. So stay tuned for the next lecture. Thank you for watching this video. Do like and subscribe the channel. Peace out.